Hello friends, welcome to Pharmatech. I am Avinash and today we will be discussing RS configuration and Fisher projection formula. So in my previous video lecture, I have explained the rules of RS configuration. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है. इवन आई बटन में आपको सजेस्टेड वीडियो में वो वीडियो दिख रहा होगा, सो यू कैन वॉच द RS configuration rules. सो यहाँ पर मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स लिए हैं जो कि ब्रॉड वे में आरएस कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करेगा अलोंग विद आईयूपैक नॉमेनक्लेचर. जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो अ वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर. तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिया जाता है, इफ क्वेश्चन कम्स एज असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉमेनक्लेट एज पर आईयूपैक रूल. सो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में हमको पता है एज पर आईयूपैक फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन. एंड जब हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करते हैं हमको फंक्शनल ग्रुप को भी ध्यान में रखना है. तो यहाँ पर मोस्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट जिसको जाएगी वो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड. सो नंबर 1 किसको जाएगा? वी विल से कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हम आईयूपैक नेम कंसीडर कर रहे हैं तो सो अवर चेन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, दैट इज नंबर 1. सेकेंड नंबर का कार्बन ये रहेगा और थर्ड नंबर का कार्बन ये हो जाएगा. दिस इज C6H5 मीन्स ये क्या है? इट्स अ फिनाइल रिंग. सो फिनाइल रिंग किसको अटैच है? CH2 ग्रुप के ऊपर ये रिंग अटैच है. सो ये है आपका C6H5. सो दिस इज 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड को हम क्या कहते हैं? वी से इट एज अ प्रोपेनोइक एसिड. अब ये प्रोपेनोइक एसिड का जो कार्बन नंबर 2 है उस पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? देयर इज अ अमाइनो. सो हम क्या कहेंगे? इट्स एज अ 2 अमाइनो. और थर्ड नंबर पे क्या अटैच है? फिनाइल. अभी हम 2 अमाइनो पहले क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. सो ए कम्स फर्स्ट एंड देन द फिनाइल. सो ये हो गया आपका नॉर्मल आईयूपैक नेम. अभी हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है. सो जब हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द कायरल कार्बन. सो यहाँ पर आप देख रहे हो देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट. वन इज COH, अदर इज NH2, one is CH2 with phenyl and fourth one is a hydrogen. So अभी आपको as per the rules प्रायोरिटी असाइन करनी है. जब हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं at that time we have to look at कि which one is having highest priority and which will have the lower one. So let us assign the priority to these groups and then we will conclude the final name of this compound. So priority assign करते वक्त we have to consider the atomic number. So यहाँ पर आप देख रहे हो this is our chiral carbon. अभी ये chiral carbon पे there is a attachment as a chiral, there is a attachment as a carbon, there is a attachment as a nitrogen, then again there is a attachment as a carbon and lastly there is a hydrogen. So number 1 highest priority किसको जाएगा? We can say the first priority will go with the amino group. The priority number 2 will come as carboxylic acid. Number 3 will come as a CH2 with phenyl and number 4 will come with hydrogen. फिर हमको देखना है कि whether we are rotating clockwise और anti clockwise. तो हम गए 1 से 2 के पास, 2 से 3 के पास. So जब हम 1 से 2, 2 से 3 रोटेट होते हैं, so this rotation indicate कि we are rotating as a counter clockwise. और counter clockwise rotation को हम क्या कहते हैं? as configuration. But as I said in my previous video कि जब भी हाइड्रोजन इन अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है और इन अदर वे जब हाइड्रोजन ये ग्रुप 4 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हाइड्रोजन हमेशा रहेगा, समटाइम इट कैन बी अ लोन पेयर. सो यहाँ पर अगर ग्रुप 4 जो है वो अगर हॉरिजॉन्टल पे लाइन पर है, सो आपको कॉन्फ़िगरेशन जो आपका आंसर है उससे अपोजिट लेना है. सो अवर आंसर इज कमिंग एज S, but this will not be S, it will become R. So the correct configuration of this chiral carbon will be R. Now coming to the second structure. अभी ये structure में again we have to apply IUPAC rule. We have to select the longest continuous chain of the carbon. So aldehyde is always preferred over other groups as a OH, OH and OH. So यहाँ पर number 1 आएगा. This will be my number 2 center. This will be 3 and this will be 4. Now out of these 4 carbon, this carbon is chiral in nature as well as this carbon is a chiral in nature. Now we have to assign RS to these 2 carbons.
सो हमको जब RS असाइन करना है, फर्स्ट वी विल असाइन टू 2 बिकॉज हमने जो यहाँ पे IUPAC नेम दिया है उसके हिसाब से 2 कम्स फर्स्ट. सो इसको जब आप RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करोगे, अगेन यू हैव टू टेक द सेम रूल इनटू कंसीडरेशन. एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको प्रायोरिटीज असाइन करनी है. सो यहाँ पे नंबर 1 प्रायोरिटी किसको जाएगा? यू विल से टू दिस ऑक्सीजन. नंबर 2 विल गो विद दिस अल्डिहाइड. यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, मीन्स कार्बन इज अटैच विथ 2 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन. यहाँ पर क्या है? दिस कार्बन, लोअर कार्बन इज अटैच विथ ओनली 1 ऑक्सीजन. हियर एज अ 1 कार्बन एंड यू कैन से 1 हाइड्रोजन. सो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, दैट इज वाई नंबर 2 विल गो विथ अल्डिहाइड. नंबर 3 will come down and number 4 will be this. So as we will rotate, it comes as 1 to 2 and 2 to 3. So ये rotation indicate करता है answer as S, but it will be R because priority number 4 groups is on a horizontal line. इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2R. Coming to the next, यहाँ पे फिर से number 1 will go with you can say oxygen. Let me change the color so that you can easily distinguish between the writing part of it. So number 1 will go with this oxygen. Number 2 will come here because this upper carbon you can say is linked with oxygen, is linked with carbon and is linked with hydrogen. While the lower carbon you can say this one is attached with hydrogen, is attached with hydrogen and is attached with oxygen. So here attachments are carbon oxygen, here attachments are only one oxygen and other two are hydrogen. So number 2 इसको जाएगा, number 3 will come here and number 4 will go with this hydrogen. So 1, 2, 3 is a rotation. So answer क्या आ रहा है? As a S, but it will not be S, it will become R. Why it will become R? Because again we can say hydrogen is on a horizontal line. और IUPAC नेम में it is 1, 2, 3, 4 carbon, so it will come as a butanol because 4 carbon containing aldehyde. There is a hydroxy group attached thrice at the position number 2, 3 and 4 respectively. So 2, 3, 4 trihydroxybutanol. The carbon number 2 will have a configuration as a R and 3 will have a configuration again as a R. So this is how you can assign RS configuration. Coming to the next example for RS configuration, as you see on the screen, this structure if it comes and you have to assign RS configuration. So RS configuration आपको assign करना है as well as आपको IUPAC name भी बताना है. तो first of all देखते हैं कि IUPAC name क्या होगा. You have to select the longest continuous chain of the carbon. तो ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये आपका कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है. So 4 carbon containing ये aldehyde है because aldehyde is a functional group over here with a higher priority. It's a dominating one. So इसको हम क्या कहेंगे? We will say it as a butanol. अभी ये ब्यूटेनॉल का जो कार्बन नंबर 2 है उस पे सब्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोक्सी, 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोक्सी एंड ब्रोमीन और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है एज OH. So we will say it as a 2, 3, 4 trihydroxy and 3 bromo. Why we are writing bromo first? Because the alphabet B comes prior to H. That is why the IUPAC name for this compound will come as a 3-bromo-2,3,4 trihydroxybutanol. Coming to the next part, how to assign RS for the structure. So ये आपका एक chiral center है जिसको हमने chiral center 2 कहा है and this is our chiral center 3. So if I look at this carbon, for this carbon there is a substituent as a C double bond O and H. Then there is a substituent as a OH. There is a substituent as a H and there is a one more carbon which is having bromine, which is having carbon and having oxygen. So जब हम priority assign करेंगे तो number 1 will go with you can say this O because it is directly linked with carbon. अभी ये कार्बन को यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, but this carbon is having bromine and this carbon is having 2O. So we know atomic number bromine का ज्यादा होता है, so number 2 आएगा इसको और number 3 जाएगा इस कार्बन. So rotation will come as a 1, 2, 3. So this rotation indicate कि ये R हो रहा है, but this will not be R, it will become S because जो हाइड्रोजन है ये horizontal line पे है. Coming to the chirality center 3. अभी ये 3 सेंटर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. There is a carbon which is attached with bromine
On upper side, it is attached with, you can say, carbon having oxygen, having carbon and having hydrogen. On lower side, again we can say it is attached with a carbon having two hydrogens and one oxygen. And on this side it is attached with OH. So number one किसको जाएगा? Obviously it will come to this, you can say, bromine. Number two यहाँ पे अब देखिए it will go with this OH. अभी नंबर थ्री आपको चेक करना है. This is carbon, this is carbon, this is carbon attached with carbon and oxygen. Okay, and on this side there is a hydrogen. Here it's carbon attached with oxygen. So number three will go with this. So my rotation will come as a, this is my one. This will become as a number two. So I will be moving as 1, 2, 2 and 2, 2, 3. Okay. So by moving 1, 2, 2, 2, 3, this will be my number 4. So number 4 group is on a vertical line. So मेरा जो आंसर आएगा मुझे उसी को करेक्ट कंसीडर करना है. So it is coming as a counter clockwise as a S rotation. So we can say that this carbon is having configuration as a S. So 2 was S and 3 is also S. We can say this compound is 2S, 3S, 3 bromo, 2, 3, 4 trihydroxy butanol. Coming to the next structure. So next structure में again हम कह सकते हैं कि हमको पहले IUPAC name find out करना है. So to get IUPAC name, पहले देखिए functional group क्या है. So in this structure the functional group is given as a carboxylic acid. So carboxylic acid को number 1 जाएगा. Number 2 will go with this carbon and number 3 will come here and number 4 will be any of these, you can say, methyl group. So this compound will be called as a butanoic acid. In this butanoic acid there is a substituent at number 2, that is amino, and number 3 as a methyl. So amino starts with the alphabet A, so we have to write as a 2 amino first and then 3 methyl. So ये हो गया इसका IUPAC name. Now coming to the RS configuration. So RS configuration में यहाँ पर कार्बन जो है वो chiral in nature है. Here it is directly attached with nitrogen, so it will get first as a priority. Number 2 जो रहेगा that will go with a carboxylic acid group because this carbon is linked with a 2 oxygen, while the lower carbon, this one is linked with carbon, so it will get number 3 and this will get number 4. So हमारा priority जा रहा है 1 से 2 के तरफ और 2 से 3 के तरफ. So these 1, 2, 3 indicate that I am moving as a S direction, that is counterclockwise, but it will be R. Why it will be R? Because hydrogen is on a horizontal line. In Fisher projection, if hydrogen is on horizontal line or group 4 is on horizontal line, either left or on right hand side, we consider the configuration opposite to our answer. Coming to the next structures. अभी यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द पेरेंट फंक्शनल ग्रुप इन दैट. सो ये स्ट्रक्चर जो है इसमें COCH3 है, सो इट्स हैविंग कीटोन फंक्शनैलिटी. सो डेफिनेटली ये कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इट्स अ कीटोन डेरिवेटिव. सो लेट अस फर्स्ट असाइन the numbers to the carbon. Let me erase this. So number 1 किसको जाएगा? To that methyl group which is attached with the C double bond O. So I can give the numbering as, this is my number 1 carbon for IUPAC name. This is number 2. ये number 3 carbon है, ये number 4 है. So I will say it as a butane 2-on. अभी ये butane 2-on पर substituent क्या है? There is a OH at number 3. There is OH at number 4. So हम उसको बोलेंगे 2,3 dihydroxy butanone. अब ये 2,3 dihydroxy butanone will become IUPAC name. Coming to the next part of assigning RS notations. So RS configuration assign करने के लिए हमको priorities assign करनी है. So this is a chiral carbon जिसमें सबसे पहला substituent है this oxygen directly linked with carbon. This is carbon which is linked with a 2 oxygen because it is C double bond OCH3. So इसको higher priority मिलेगा. So it will get priority 2. इसको मिलेगा priority 3. इसको मिलेगा priority 4. So हमारा rotation है 1, 2, 3. So which is coming as a answer S counterclockwise, but it will not be S. It will become R. Why it will become R? Because in Fisher projection this hydrogen is on a horizontal line. So name of this compound will come as a R2,3 dihydroxy butane 2-on. Coming to the next structure.
अभी ये स्ट्रक्चर में अगेन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द पेरेंट. So parent will be having carboxylic acid. So it is number 1 carbon. This is number 2. This is our number 3. This will be number 4. So this compound will be a butanoic acid. So we can say it as a butanoic acid. The substituent are at number 2 there is a phenyl. Number 2 there is a chloro. So we will say it as a 2-chloro and we can say as a 2-phenyl. And at number 3 there is a methoxy. So name of compound will come as alphabetical order you write it. So 2-chloro, C comes first. Then we will say as a 3 you can say methoxy because M comes later on and then P comes. So strictly follow the alphabetical order. Don't say as a 2-chloro 2-phenyl. Say it as 2-chloro 3-methoxy 2-phenyl butanoic acid. Next to the name we have to assign RS configuration. So to assign RS configuration, we have to consider the rule number 1. In rule number 1, we have to look at the atomic number of directly attached, you can say atoms. So we have given number 2 to the upper carbon. So I will say that this is my carbon number 2 in this structure. Let me take cursor to the right location so that I can easily tell you. So I'm selecting this color to assign the numbers. So this is my number 2 center and this is my number 3 center. So number 1 will go with this chlorine because it has a highest atomic number. Now about number 2, here it's carbon, here it's carbon, here it's carbon. So we will say as this carbon is attached with carbon and this carbon is further attached with, you can say, oxygens. So there are oxygens as, you can say, 1. There is second oxygen and there is a third oxygen which is having OH. Over here it's a carbon which is attached with a phenyl ring ka 2 carbon and 1 more carbon. On lower side there is a carbon which is attached with a oxygen which is attached with hydrogen and you can say carbon, and here it was Cl. So our priority number 1 is Cl. Priority number 2 will go with this. Why 2 will? Because there are 3 oxygens. Number 3 will come this lower group because there is a oxygen, carbon and hydrogen. And number 4 will be with this because it is having all carbons. So the rotation will come as 1 to 2 and 2 to 3. So this rotation indicate that my answer should be R over here. But it will no longer be R, it will become S because we can say group 4 is on a horizontal line in the fissure. So number 2 center is having configuration as a S. Coming to number 3, so priority very first will come with this oxygen which is directly linked. Number 2 will come with this because it is having chlorine, then carbon and then carbon. So number 2 will be this. Number 3 will be this methyl group and number 4 will be hydrogen. So my rotation goes as 1 to 2 and 2 to 3, which indicate that I am rotating in a direction as a R. But it will no longer be R, it will become S because again hydrogen is on a horizontal line. So this is how you can assign the RS configuration. So if you are liking my content, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. कोई वीडियो आपको और डिफरेंट वे से चाहिए तो यू कैन गिव सजेशंस. डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, टू शेयर इट with your friends and to subscribe it. Also press the bell icon so that you will get the notifications of all my upcoming videos. Thank you for listening.